Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all to learn Chinese language with Chinese language made easy. I'm Muhammad Shahid and today I will tell you how to say I have a fainted person here. मेरे पास एक बेहोश शख्स पड़ा है। ये मैं कैसे बोलूँगा और लिखूँगा चीनी ज़बान में, तो ये अभी आप मुलाहिज़ा करें। 我这儿有人昏倒，我这儿有人昏倒，昏倒。我 means I. Here it is I. And this word, this right here, in characters, this word, 我这儿 means here, here, okay, here. 有人 have a person, have a person. 昏倒 unconscious, fainted, someone who's unconscious, someone who's fainted. So मेरे पास एक बेहोश शख्स पड़ा है। 昏倒 बेहोश को कहते हैं। वो means I यानी मैं, जार यहाँ पर, 有人 एक शख्स, 有人 एक शख्स है, 昏倒 बेहोश, मेरे पास एक बेहोश शख्स पड़ा हुआ है. This is how we say it in Chinese. Now let's get to know how to write this sentence in Chinese characters. Okay, so let's proceed and get to know about that. Okay, so right here you can see that the first word was wa, means I, yani मैं. Okay, and how to write jar, jar, jar. Here, here, यहाँ पर. 有人，有人，有人 एक शख्स है. A person, have a person, have a person. And when 昏倒，昏倒 so fainted, fainted, बेहोश,